Hello everyone, welcome again with another MCQ of GATE 2024. देखते हैं क्या कर रहा है. So this is basically a question from mathematical logic, propositional logic. क्या कह रहा है ये? Let P and Q be the following propositions. क्या है सर? P एक proposition है जो बोलता है fail grade can be given. अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सर negation of P क्या होगा, तो अगर P का मतलब है fail grade can be given, therefore not P will be what? The not P will be that fail grade cannot be given. आया ना? Can be given and cannot be given. What the क्या बोल रहा है? Q का मतलब है स्टूडेंट स्कोर्स मोर देन 50% मार्क. ठीक है, जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं नेगेशन Q को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो नेगेशन Q की डेफिनेशन क्या होगी? Negation of Q will be that a student does not score more than 50% marks. ये दो प्रोपोजिशंस हैं और इनके नेगेशन में बहुत इजीली इवेल्युएट कर सकता हूं. ठीक है, उसके बाद मुझे क्या गिवन है? कंसिडर दी स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट गिवन है क्या? fail grade cannot be given. So what is this fail grade cannot be given? Sir, fail grade cannot be given is actually negation of P. Fail grade cannot be given is actually negation of P when is actually equivalent to if. Fail grade cannot be given if the student score more than 50% marks. What is student score more than 50% marks? Sir, student score more than 50% mark is actually Q. Student score more than 50% mark is actually Q. तो मुझे क्या given है? Consider the statement negation P if Q. Consider the statement negation P if Q. That is, fail grade cannot be given when student score more than 50% mark. It exactly same as negation of B if Q. अभी क्या बोल रहा है? Which of the following is the correct representation of the above statement in propositional logic? तो ये हमने ऑलरेडी बता दिया है कि सर ये क्या है, इस तरीके से. तो समझना यहां से, सर अगर ऐसा कुछ होता है x if y is actually equivalent to if y then x, that means it is actually equivalent to y implies x. Is actually equivalent to y implies x. So x if y will be equivalent to y implies x. Therefore मेरे पास क्या है? Negation of p if q will be equivalent to q implies negation of p. Obviously p if x, अगर x if y लिखा हुआ है तो उसका मतलब है if y then x. X if y, that is if y then x. If y then x. If then स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूजिंग इम्प्लीकेशन. सो if y then x will be equivalent to y implies x. So x if y is same as y implies x. इसका मतलब negation of p if q will be same as q implies negation p. Will be same as q implies negation p. So for this question, this is the easiest question in discrete mathematics for GATE 2024 students. So answer will be option. Thank you very much.